Hi dear students, welcome back to Abhijit Sana Maths. In this video, we are discussing the topic that is scalar and vectors. Then what is scalar quantity? A scalar quantity is a physical quantity that has only magnitude and no direction. Means एक ऐसी quantity जिसका उसको क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है. अब ये मैग्नीट्यूड मीन्स क्या है? कोई भी न्यूमरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या फिर कोई भी चीज की वह मात्रा बताता है. यानी एक ऐसी एंटिटी जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वी विल कॉल इट एज अ स्केलर क्वांटिटी. By taking some example, mass, here mass is representing by this number 5 kg, here time that is 10 second, distance 20 meter, speed 15 meter per second, and temperature 30 degree centigrade. Here this entities are represented by this numeric values. ऐसे physical quantities जो किसको represent करता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, but without direction, means here direction is not important, therefore no direction. How can we define vector quantities? The vector quantities are physical quantities that has both magnitude as well as direction. Means an entity or physical quantity which have both magnitude as well as direction, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? दैट इज वी कॉल्ड इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी. बाय टेकिंग सम एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10 मीटर ईस्ट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 10 मीटर और ईस्ट ये डायरेक्शन है, तो इस दैट्स व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 20 है और नॉर्थ इज द डायरेक्शन, देयरफॉर ये वेलोसिटी भी क्या है? दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी and acceleration, momentum, both are the vector quantities. Because difference between scalars and vectors, scalar quantity and vector quantity, scalar quantity has only magnitude, where vector quantity has magnitude as well as direction. And here no direction is important, here direction is required. Here added normally, and vector quantities are added by vector laws. One thing which is very important to remember, that is a scalar has only magnitude and vector has magnitude as well as direction. Do like, share and subscribe Abhijit Sana Maths for basic, intermediate and advanced level of mathematics, physics and coding. Subscribe now, join the learning journey.